दोस्तों को, शुभचिंतकों को। और मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, लॉ एजुकेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872। और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हो। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम रोज ना रोज आए दिन अपने ज़िंदगी में जो हम लोग दिनचर्या में जो यूज़ करते हैं, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता है। चाहे वो हम खाने पीने का हो, अपने रहने का हो, किसी के साथ बिजनेस हो, किसी के साथ ई कॉमर्स हो, कोई लेटर हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई प्रॉमिस हो, कुछ ना कुछ हम लगातार करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आया। जब पहले यह महसूस किया जाता था कि 1872 से पहले कि इस तरह के जो लेन देन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक कानून बनना जरूरी है। और उस समय इंडियन पार्लियामेंट जो ब्रिटिश के समय था, उसने एक पास किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो चलिए हम इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं। और जैसे कि सभी जानते हैं कि कोई भी लॉ बनता है और तो उसमें अलग सेक्शंस होते हैं और उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो प्रिलिमिनरी जो होता है, प्रिलिमिनरी सभी में होते हैं, चाहे वो किसी तरह का कानून बने। तो प्रिलिमिनरी में है, पहला शॉर्ट टाइटल है, कमेंसमेंट है, सेविंग्स है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ये सब के बारे में है। चैप्टर ये सेक्शन 1 में और 2 में प्रिलिमिनरी है, जिसमें शॉर्ट टाइटल्स और एक्सटेंड कमिटमेंट, सेविंग्स और इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में सेक्शन 2 में दिया हुआ है। चैप्टर 2 में दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। सेक्शन 3 में दिया हुआ है कम्युनिकेटिंग, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के बारे में जानकारी दी है। सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। सेक्शन 5 में रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 6 में रिवोकेशन हाउ मेड। और सेक्शन 2 में जो है ऑलरेडी इसका कॉन्ट्रैक्ट के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। उसमें ये सब क्लाउज है, ABCD अलग अलग। और सेक्शन 7 में एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन 8 में जो है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन के बारे में है। सेक्शन 9 में प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, इसके बारे में है। सेक्शन 9 तक जो है चैप्टर 1 में दी गई है। अब आते हैं तो चैप्टर 2 में है कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड एग्रीमेंट के बारे में चर्चा। व्हाट इज द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 है। सेक्शन 11 हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 में। सेक्शन 12 में है व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। चैप्टर 2 के सेक्शन 13 में है कंसेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 15 में कोएरिशन को डिफाइन किया गया है, कोएरिशन। सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया गया है।
सेक्शन 17 फ्रॉड को डिफाइन किया गया। 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया गया। सेक्शन 19 में वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। सेक्शन 19A में पावर टू सेट aside contract including the unique influences. Section 20 में agreement provide whether both party are under mistake or matter of fact. Section 21 में effect of mistake of as a law. Section 22 में contract caused by mistake one party to matter of fact. Section 3 में what considerations and objects are lawful and what not, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद वाइड एग्रीमेंट्स के बारे में है। सेक्शन 24 to 30 एग्रीमेंट वाइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। सेक्शन 25 एग्रीमेंट विदाउट consideration wide unless it is writing and registered or it is promises to compensate for something done or is promised to pay a debt bear by limitation law. Section 26 में agreement in restraint of marriage void, agreement of restraint of trade void, saving of agreement not carry on business of which goodwill is sold. Section 28 agreement in restraint of legal proceedings void, saving of contract to refer to abstraction dispute they may rise, saving of contract to refer questions that have already arisen, saving of guarantee agreement of a bank or financial institution. Agreement void for uncertainty. Agreement by way of waiver void, exception in favor of certain prices for horse racing. Section 294A of Indian Penal Code not affected. चैप्टर 3 में दिया है contingent contract. 31 defines, section 31 defines about the contingent contract, defines section 32 enforcement of contract contingent on an event happening. 33 enforcement of contract contingent on the event not happening. Section 34 when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person. Section 35 when contract becomes void which are contingent on happening of a specific event with fixed time. When contract may be enforced which are contingent on a specified event not happening within the fixed time. 36 agreement contingent on impossible event void. चैप्टर 4 में है द परफॉर्मेंस ऑफ contract which must be performed. Section 37 obligation of parties to contract. Section 38 effect of refusal to accept offer of performance. Section 39 effect of refusal of party to perform promises wholly. By whom contract must be performed, it's given in section 40 to 45. Person by whom promise is to be performed, then effect of accepting performance from third person.
Section 42, devolution of joining liabilities. तो हस्तांतरित करना जो ज्वाइंट लाइबिलिटीज को 43 any one of joining promisers may be compelled to perform each promiser may compel contribution sharing of loss default in contribution. Section 44 deals about effect of release of one joint promiser, devolution of joint right, next time and place for performance. Section 46 times and performance of promise when no application is to made and no time is specified. Section 47 time and place for performance of promise where time is specified and no application be made. Section 48 application for performance on the certain day to be at proper time and place. Section 49 place for performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance. Section 50 performance is manner or at time prescribed or sanctioned by promise. Section 51 from 51 to 58 tells about the performance and reciprocal of promises. 51 promises not found to perform unless reciprocal promises ready and willing to perform. Section 52 order of performance of reciprocal promises. Section 53 liability of the party preventing event. On whole, the contract is take effect. Section 54 effect is default as so that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises. Section 55 effect of failure to perform at fixed time in contract which time is essential. Effect of such failure when time is not essential. Effect of acceptance of performance at time other than that agreed upon. Agreement to do impossible act. Contract to do and afterwards becoming impossible or unlawful. Compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful. Section 57 reciprocal promise to do things legal and also other things illegal. Section 58 tells about the alternative promise, one branch being illegal. Next, sections 59, 60 and 61 tells about the appropriation of payment. Section 59 tells about the application of payment where debt to be discharged in indicated. Section 60 application of payment where debt to be discharged is not indicated. Section 61 application of payment where neither party appropriates. Next, section 62 to 72 tells about the contract which need to be performed.
62 section effects on novation, rescission, and alteration of contract. So next 63 promises may dispense with or remit performance of promise. Section 64 consequences of rescission of voidable contract. Section 65 obligation of person who receives advantage under void agreement or contract that becomes void. Mode of communicating or revoking rescission of voidable contract. 67 sections effect of neglect of promisee to afford promisor reasonable facilities of performance. Next, chapter 5 tells about the certain relation resembling those created by contract. So that's section 68 claim for necessary supplies to the person incapable of contracting on his account. Reimbursement of person paying money due to another in payment of which is interested. Section 70 obligation of person enjoying benefit of non-gratuation gratuitous, gratuitous act. So then section 71 tells about the responsibility of the finders of goods. 72 tells about the liability of person to whom money is paid or things delivered by mistake under the coercion. Chapter 6 tells about the consequences of breach of contract. 73 sections tells about the compensation for loss or damage caused by breach of contract. 74 tells about compensation for breach of contract where penalty stipulated for. Section 75 party rightfully rescinding contract entitled to compensation. सो consequences of breach of contract के बारे में चैप्टर 6 में दिया हुआ है। इसके बाद इसमें सेल्स ऑफ गुड्स को बाद में नए कानून के तहत जो है इसको रिपील्ड कर दिया गया। सेक्शन
क्योंकि एक नया कानून उसका बन गया 76 से लेके 123 तक जो थे प्रोविजंस, उसको मिला के नया कानून आया, जो बाद में जिसकी चर्चा करेंगे हम लोग। और चैप्टर 8 में दिया हुआ है इंडेमनिटी एंड गारंटी। सेक्शन 124 contract of indemnity defines section 125 tells the rights of indemnity holder when sued. Section 126 contract of guarantee. Section 128 sureties liability. Section 129 continuing guarantee. Section 130 revocation of continuing guarantee. Section 121 revocation of continuing guarantee by surety death. Section 132 liability of two persons, primary liable not affected by arrangement between them, then that one shall surety others default. 133 section discharge of surety by variance in terms of contract. Section 134 discharge of surety by release of discharge of principal debitor. Section 135 discharge of surety when creditor compounds with, gives time to, or agrees not to sue principal debitor. Section 136 surety not discharged when agreement made with the third person to give time to principal debitor. Section 137 creditors forbearance to sue does not discharge surety. Section 138 release of one co-surety does not discharge others. Section 139 tells about the discharge of surety of creditors act on omission impairing surety's eventual remedy. Section 140 tells about the right of surety on the payment of or performance. Section 141 surety right to benefit of creditors' securities. 142 guarantees obtained by misrepresentation invalid. Section 143 guarantee obtained by concealment invalid. Guarantee on contract that creditors shall not act on it until co-surety joins. Implies promise to identify surety. Section 146 tells about the co-surety is liable to contribute equally. Section 147 liability of co-sureties bound in different sums. Chapter 9 tells about bailment. So bailment
148 tell about bailment, bailer, and bailies defines. Section 149 delivery to the bailies how made. Section 150 bailers duty to discharge falls in good bail. Section 141 care to taken by bailee. 152 bailee when not liable for loss, etc. to things bail. 153 termination of bailment by bailies act inconsistent with conditions. 154 libel of bailee making unauthorized use of goods bailed. 155 effect of mixture with bailor's consent on his good with bailees. 156 effect of mixture without bailor's consent when the good can be separated. 157 effect of mixture without bailor's consent when the good cannot be separated. 158 repayment by bailor of necessary expenses. 159 tells what restoration of goods tend graciously, graciously, gradu- graciously. Next tells about the Section 160 return of goods billed on the expiration of time or an accomplice of the purpose. Bailey's responsibility when the goods are not in duty return. 162 termination of gratuities bailed by death. 163 bailers entitled to increase the profit from goods bailed. 164 tells about the bailor's responsibility to bailee. 165 tells about the bailment by several joint owners. 166 tells a bailee is not responsible on a redelivery to bailers without titles. 167 a right of third person claiming goods bail. 168 a right of finder of goods misuse for a specific rewards offer. 169 when finder of things commonly on sale may sell it. 170 bailies particularly lien. 171 general lien of bankers factors where finders, attorneys and policy brokers. So next bailment of pledge. So tells it tells the section 172 to 179. Pledge pawnor and pawnee defines.
Pawnee's right to retainer, section 173. 174. Pawnee not to retain for debt or promises other than that for which goods pledged presumption in case of subsequent advances. 175 tells about the pawnee's right as to extraordinary extraordinary expenses incurred. Pawnee's right where the pawners make defaulting pawners right to redeem. 178 tells plays by mercantile agent. 178A plays by person in possession under the voidable contract. 179 still plays where the pawners has only the limited interest. Next, suit, suits by bailies or bailers against wrongdoers. Then section 180 suits by bailer or bailee against wrongdoer. Section 181 apportionment of relief or compensation obtained by such suits. Chapter 10 tells about agency. Section 182 agent and principal defined. Section 183 who may employ agent. Section 184 who may an agent. Section 185 consideration not necessary. Section 186 agent's authority may be expressed or implied. Section 187 definitions of express and implied authority. Section 188 extend or agent's authority. Section 189 agent's authority is an emergency. Next, sub-agents. Section 190. When agent cannot delegate. 191 sub-agent defines. 192 representation of principal by sub-agent properly appointed. Agent's responsibility for sub-agent's responsibility. It tells 192. 193 tells about agent's responsibility for sub-agent's appointment without authority, relation between principal and person duly appointed by agent to act business of agency. 195 agent's duty in naming of such person. Ratifications under 196 to 200. Right of person as to act done for him without his authority. Effect on ratification. 197 ratification may be expressed or implied. Next, 198. 198. Knowledge of requisite for the valid ratification. 199. Effect of ratifying unauthorized act forming part of transaction. 200. Ratification unauthorized act
not injure third person. 201 termination of agency. 202 termination of agency where the agent has an interest in subject matter. 203 when the principal may revoke agent's authority. Revocation where authority has been partially exercised. Compensation for revocation by principal or renunciation by agent. Notice of revocation or renunciation. 207 revocation of renunciation. Next, 210 termination of sub-agent's authority. Next, agent's duty to principal tells about section 211 to 222, 221. So 211 tells about the agent's duty in conducting principal's business. 212 skill and diligence required from agents. Agents accounts. 214 agents duty to communicate with principal. 215 a right of principal when agent deals on his own account in business of agency without principal's consent. 216 principal's right to benefit gained by agent dealing on his own account in business agency. 217 agent's right of retainer out of sums received on the principal account. 218 agent's duty to pay sum receives. Next, principal's duty to agents 222 to 225 and effect on agency on contract with the third persons tells about 226 to 233. Section 234 tells about consequences of inducing agent or principal to act believe that principal or agent will be held exclusively liable. 235 liability of pretended agent. 236 persons falsely contracting as agent not entitled to performance. 237 liability of principal including belief that agents on the authorized act were authorized. 238 effect on agreement, misrepresentation or fraud by agent. So चैप्टर 10 में हम लोग देख लिया. चैप्टर 11 में है पार्टनरशिप. इसको भी एक नया कानून के तहत जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये इसमें से रिपील्ड कर दिया गया. तो टोटल जो इसमें से दो अलग कानून बनाए गए हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप जो 239 से 266 था उसको जो है रिपेल्ड कर दिया गया. उसके शेड्यूल्स को भी रिपेल्ड कर दिया गया. तो इस तरह हमने पढ़ा आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872.
और इसके बारे में भी बताया कि इससे दो कानून जो है तो रिपील कर दिया गया है, और ये एक जो है सेल्स ऑफ गुड्स को और एक पार्टनरशिप एक्ट को जो है दो अलग कानून के रूप में बना दिया गया है। तो इससे यहाँ दोनों इससे हट गए। टोटल जो है इसमें सेक्शन 266 थे, और इसमें से जो इसको हटा दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और इसके तो आपने देखा कि प्रिलिमिनरी में शॉर्ट टाइटल्स है, और सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाउजेज दिया गया है। इसके बाद हम लोग ने देखा चैप्टर 1 में कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के बारे में चर्चा किया गया है। इसके इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं। और अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि जो है उसकी चर्चा हम लोग विथ इलस्ट्रेशन के साथ हम लोगों ने आगे भी हम लोग करेंगे। जैसे कि हम लोग को चैप्टर 3 में है कंटीजेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में चर्चा है जो हम लोग बता चुके हैं। इसके बाद चैप्टर 4 में है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा की गई है। इसके इलस्ट्रेशन भी इसमें जो है एक्ट में दिए गए हैं। चैप्टर 5 में सर्टेन रिलेशन resembling those created by contract, उसके बारे में चर्चा की गई है। चैप्टर 6 में consequences of breach of contract के बारे में चैप्टर 6 में बताया गया है। और चैप्टर जो 7 थे, जो सेल्स ऑफ गुड्स है, जिसको जो रिपील कर दिया गया है, और नए कानून जो इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 जो है उसमें इसको ले गया है यहाँ से। चैप्टर 7 चैप्टर 8 में इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में चर्चा की गई है। इसके इलस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं। चैप्टर 9 में बेलमेंट के बारे में दिया हुआ है। बेलर और बेलीज को डिफाइन किया गया है। चैप्टर 10 में एजेंसी के बारे में बताया गया है। एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइन किया गया है। एम्प्लॉय एजेंट इस सब के बारे में जो है एम्प्लॉय एंड एजेंट के बारे में चर्चा की गई है। और इसकी इलस्ट्रेशन भी दिखाया गया है।
तो हम इस तरह देख सकते हैं कि जो चैप्टर 10 में तक जो है 238 सेक्शंस हैं, और जो अंतिम चैप्टर 11 है उसमें पार्टनरशिप को रिपीट कर दिया गया है, और ये मिलाकर टोटल 266 इसमें सेक्शंस थे। तो आज हम लोग ने जाना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर तब विदा लेते हैं, फिर हम एक नए कानून के साथ आपके बीच एक नए एक्ट के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप पहले फेज में आप क्या है उसको जानें, फिर अलग अलग हम आगे के सेक्शंस में आगे के वीडियो में हर एक छोटी चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।